Okay guys, let's do section 4 and then we are going to do speaking, and I think today class will finish around 9:15 or 9:20, right after speaking. We'll do part 1 today. So questions 31 to 40. This is part 4 listening and you must target 10 out of 10 here. और आ भी जाएगा. आमतौर पे होता है 1 word only. ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है बुक का, इसमें no more than 2 words है. लेकिन कोई पता नहीं आपको भी नो मोर देन 2 वर्ड्स आ जाए, पुराना टेस्ट चला दें. सो यू शुड बी रेडी. कभी भी ये नहीं सोचना कि शायद अब मेरे लिए आज टेस्ट का वो बदल गया है, मेरी किस्मत ही ख़राब है. नहीं, जैसा भी टेस्ट आए वही सब कुछ होगा, उसको करके आना है. ठीक है, ये घबराना नहीं है, अपने आप को कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना. ऑल राइट, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स. सिरामिक्स, सिरामिक्स का पता है, जो वेसिस होते हैं, कुछ मग्स भी हमारे सिरामिक के बनते हैं, चाइना मट्टी. टाइल्स भी सिरामिक टाइल्स होती हैं. वॉश बेसिन दे आर मेड ऑफ सिरामिक्स. अब जरा सोचिएगा, 3 चीजें दी हुई हैं, एक है सिरामिक्स, एक है ग्लास, एक है कंक्रीट. ठीक है, पूरी ऑडियो जो है इन 3 चीजों के बारे में है. क्वेश्चन नंबर 31 है, सिरामिक्स डेट बैक अप्रॉक्सीमेटली. डेट बैक का मतलब है पास्ट में कितने साल पहले सिरामिक्स जो है वो बने. जब भी वर्ड आए ना आईएल्स रीडिंग में या आईएल्स लिसनिंग में, डेट बैक अप्रॉक्सीमेटली, इसका मतलब है आंसर इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ ईयर्स. राइट, डेट बैक नंबर ऑफ ईयर्स. अब ऑडियो में आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताएंगे और है भी क्वेश्चन टाइप क्या है, नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर. बोलेंगे जी सिरामिक्स डेट बैक. अब डेट बैक के लिए वर्ड आता है अगो. राइट, अगो का वर्ड आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा. बट एनीवेज योर आंसर इज गोइंग टू बी अ नंबर, और उस नंबर के साथ या तो ईयर्स आ सकता है या सेंचुरीज आ सकता है, 2 centuries, 3 centuries, like that. Let's see. Hi everyone. Today I'm going to be talking about the origins of ceramics. So first of all, let's start off with, what is a ceramic? Well, generally speaking, ceramics are what you get when you apply heat to certain inorganic, non-metallic solids and then allow them to cool. And examples of ceramics are everyday things like earthenware pots, crockery, glassware, and even concrete. So how did it all begin? Well, it all started around 29,000 years ago, when humans discovered that if you dig up some soft clay from the ground, mould it into a shape, and then heat it up to a very high temperature, when it cools, the... Okay, it all started 29,000 years ago, they said. So the answer is 29,000 years. So 29,000 should be written as a number, 29000. ठीक है, ये 29,000. अगर आप लिखते हैं TWENTY देन 1000 देन years, तो ये 3 वर्ड्स हो जाएंगे. नंबर जब भी आए नंबर को डिजिट में ही लिखें, दैट्स बेटर. 29,29000 और उसके बाद years. और अगर years नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत है. ठीक है, अच्छा जी 32. अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आईएल्स लिसनिंग में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका आपको मीनिंग नहीं आता तो क्या करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32. द फर्स्ट फिगोरीन्स. अब अगर फर्स्ट करें, आपको नहीं पता फिगोरीन क्या बला है, चॉकलेट के साथ खाते हैं या स्ट्रॉबेरी के साथ खाते हैं या क्या है, डोंट वरी, अभी जरा देखिएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है. राइट, द फर्स्ट फिगोरीन्स वर मेड इन द एरिया ऑफ. फिगोरीन का वर्ड वो एग्जैक्टली फिगोरीन ही यूज करेगा, जो भी है. पंजाबी में नहीं कहते खसमानू खाए. आपने क्या देखना है, एरिया ऑफ. एरिया ऑफ का मतलब है लोकेशन. अब ये एरिया या तो कोई सिटी हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है, या कोई कॉन्टिनेंट हो सकता है. एरिया ऑफ. अब जस्ट फोकस करना है आपने एरिया पे. ठीक है, सिटी नेम, कंट्री नेम, और इट कैन बी द कॉन्टिनेंट. सो लेट्स सी. And so what did those first humans do with their discovery? Well, they created figurines, which were small statues and which depicted animals or gods or any shape that the clay could be moulded into. And all this activity was centered around southern Europe,
where there is also evidence of ceramics that were created much later. So, yes, all this activity was centered around. Centered around means in the area of. And then Southern Europe. अब अगर आप लिखते हैं only Europe तो क्या आंसर ठीक होगा? नहीं. Because it's the area. Southern Europe. Exactly. Okay, let's move on. Question number 33. Early humans could not use their pots to store. कि जो शुरू के इंसान थे उनके बर्तनों में क्या चीज़ स्टोर नहीं हो सकती थी? वैसे सोचें क्या नहीं स्टोर हो सकता था? हाँ? Yeah, right, maybe. But let's see. क्या चीज़ है जो स्टोर नहीं हो सकती थी? So that's what you need to focus. The early humans also found a practical use for their discovery, such as storing things like grain, although there were drawbacks. The pots were porous, so that although they could carry water in them, it wasn't possible to store it over a long period. And also they were quite brittle and shattered very easily if they were dropped. What's the answer? Water. Okay, now they used one thing, we call it referencing. कि पहले एक word बता दिया, उसके बाद आंसर के साथ वो word नहीं यूज किया, आंसर के साथ यूज किया it. ठीक है, जरा फोकस कीजिएगा. इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं लिसनिंग में. जरा सुनिएगा कि आंसर के साथ उसने water नहीं लगाया. So that although they could carry water in them, it wasn't possible to store it over a long period. It wasn't possible to store it. तो आप कहेंगे जी मैंने it लिखा था. क्यों लिखा था? He, she, it नहीं हमने पढ़ा हुआ, तो मैंने it लगा दिया उधर. So yeah, 80 बजेगी. Wow, that's good. फिर it बजेगी. 8 बजी मैनू तकदीर दी. हाँ, all right, good. वैसे it मूवी अच्छी है. Yeah, देखी किसी ने it? नहीं. All right. अच्छा जी, 34. The Chinese, अब Chinese की बात होगी. The Chinese improved the quality of ceramics by mixing. Chinese ने ना कोई चीज डाली उसके अंदर, ठीक है, उससे क्या हुआ? सिरामिक की क्वालिटी बेहतर होगी. अब वो क्या चीज डाली? That is your answer. ठीक है, Chinese ने कोई इसमें खास फॉर्मूला डाला जैसे आजकल फॉर्मूला डाला हुआ है. So it's just like that. Chinese improved the quality of ceramics by mixing dash with the clay. कि मट्टी में उन्होंने कुछ ऐसा मिलाया कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई. But despite these problems, it was many thousands of years before there were any improvements. In China, at around 200 BC, they discovered that by adding minerals to the clay, they could improve both the appearance and the strength of the ceramics. By adding minerals to the clay, so they mixed it with minerals. By adding की जगह पे आ गया by mixing. बात समझ आ रही है ना सारी? Synonyms चल रहे हैं सारे. Okay, that's good. किसके? Mixing के? Minerals के? Minerals. Meme, noon, M-I-N-E-R-A-L-S. ठीक है? M-I-N-E-R-A. इससे पहले तो सादा से चल रहे थे. वाटर के स्पेलिंग नहीं आते आपको? W-A-T-E-R. Yeah, okay, good. अच्छा जी, आगे चलते हैं. 35. Chinese porcelain was also called, very simple, Chinese porcelain का एक और नाम है कि नाम मेरा असद है, मुझे घर में माजा कहते हैं. Something like that, okay? So Chinese porcelain, मुझे माजा नहीं कहते, मजाक सिर्फ वैसे बता रहा हूँ. ये ओके. और एक तो वीडियोस में कहा फेर कींदे बूटा गाला कर देने का बूटा आइल्स वाला है. सो ये चाइनीज पोर्सलेन वाज आल्सो कॉल्ड की जगह पे आएगा नेम्ड एज. पीपल आल्सो नेम्ड एज एंड देन दैट विल बी द आंसर. ओके. But it took nearly 1,000 years before they perfected the process to produce high-quality ceramics known as porcelain. And once they had perfected the process, they kept it a secret for another 1,000 years. Compared to the first ceramics, porcelain was lighter, finer, harder, and whiter, and became an important commodity in China's trading with the rest of the world for hundreds of years. In fact, it became so valuable that it was known as white gold,
and spies were sent to China to discover what they did to the clay to produce such high quality merchandise. वाइट गोल्ड. और चेक करें अभी जो आपने आंसर दिया ना मिनरल, उसके लिए जासूसों को भेजा गया कि चाइना में जाओ पता करो इन्होंने क्या डाला. 1000 साल तक उनका सीक्रेट किसी को नहीं मिला कि उन्होंने क्या डाला. ऐसे ही उस वक्त भी यही था, 1000 साल तक अपना सीक्रेट छुपा के रखा और आपको आंसर मिल गया मिनरल्स. और फिर अब आप बातें करते हैं. हाँ ऑलराइट. मतलब देखिए ना, मिनरल जो था वो उस दौर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36. बॉटगर एडिट. बॉटगर पता है कौन है? मेरे मामे का बड़ा मुंडा है. कम ऑन, इट कैन बी एनी पर्सन. नहीं भी पता तो क्या, पढ़ना भी नहीं आ रहा तो छोड़ दें उसको. बॉटगर कौन है? पता नहीं, उस दिन शादी में आया हुआ था है ना. बॉटगर एडिट क्वार्ट्स. अब अगर क्वार्ट्स का भी नहीं पता तो डोंट वरी एट ऑल. बॉटगर एडिट क्वार्ट्स एंड डैश. अब आंसर आएगा क्वार्ट्स के साथ. ठीक है, बॉटगर ने क्वार्ट्स और क्या डाला? टू क्ले टू मेक पोर्सिलेन. राइट, सो लेट्स जस्ट गो ऑन. It wasn't until the 18th century that the secret began to unravel. A German alchemist called Johann Friedrich Böttger was asked by the king to make gold out of lead. Unfortunately, Böttger failed to achieve this and soon gave up. But in order to please the king, he attempted to make high-quality porcelain. And after many years of experimentation, he discovered that by adding quartz and a material called China stone to very high-quality clay, he managed to get the same results that the Chinese had been achieving for the last 1,000 years. Yeah, material. That was a trap. China stone is the answer. Exactly. Material called. Material called का मतलब है कि उस मटीरियल का नाम क्या था. तो मटीरियल तो आंसर नहीं हो सकता ना. So quartz and China stone will be the answer. हाँ तो भी ठीक है, आप चाइना की जगह पे जर्मनी लिख दें. कितने मासूमाना सवाल है आप लोगों के हैं. चाइना नमक ना कहें, खाली कहें नमक दे दो तो वो क्या देगा आपको? साढ़े वाला नमक देगा. चाइना नमक साथ कहना है. ठीक है. China's stone. No, but in the audio they said China stone. I play it again. Don't worry. ठीक है, तो चाइना लिखना है साथ. ये चाइना नहीं, तुसी अगे आप पे सियाने हो. Fortunately, Böttger failed to achieve this and soon gave up. But in order to please the king, he attempted to make high-quality porcelain. And after many years of experimentation, he discovered that by adding quartz and a material called China stone. Okay, China stone and a material called China stone. Okay, let's go on. Now we've got glass. 37. Glass production is similar to clay ceramics apart from the rate of dash. The difference between glass production and ceramics apart from the rate of that. Now what's the difference? That will be your answer. Apart from the rate of something. For rate of, they can use any other word. We'll now look at another ceramic which is made from mixing sand with minerals and heating to over 600 degrees Celsius. When this mixture cools, the result is of course glass. The main difference between ceramics made from clay and glass is that clay is made up of crystalline plates which become locked together in the cooling process, whereas glass cools too quickly for crystals to form. Apart from that, the process of heating up naturally occurring materials to transform them is the same. So what's the difference? That's right, cooling. Rate of cooling. Cooling process rate के साथ नहीं आ सकता ना. Rate of cooling process, but they have not given it in the option. They've only written cooling or cooling down. Right? Let's listen to it again. And heating to over 600 degrees Celsius.
When this mixture cools, the result is, of course, glass. The main difference between ceramics made from clay and glass is that clay is made up of crystalline plates which become locked together in the cooling process. Which becomes locked together in the cooling process, and that's the difference. So cooling should be the answer. Whereas glass cools too quickly for Glass cools too quickly. So rate of cooling actually, right? Okay, next we've got question number 38. Romans introduced the use of glass to make. Romans ने glass का क्या बनाया? जो बनाया, that will be the answer. The origins of glass date back to 3500 BC, but it wasn't until the Roman Empire, 2000 years ago, that the art of glass blowing and the practical uses of glass became more widespread. One of the more innovative uses was to use it in windows, as up until then they had just been holes in walls. It must have been very drafty in those days. So, exactly, windows, that's right. Okay, let's go on. Concrete, the last one, 39. The discovery of concrete is probably due to observing reactions of water and, so it's going to be another substance, water and, right? So the answer will come with water. The Romans were also responsible for inventing concrete. And although the origins are uncertain, experts think that this is largely due to the high level of volcanic activity in the area. The Romans observed that when volcanic ash mixes with water and then cools, it gets extremely hard and almost impossible to break up. The chemical reaction that followed... Only ash will be wrong. Volcanic ash, right? Volcanic should come with it. And by the way, in this answer, they use the word volcanic ash first and then they used water. I play it again. Listen. The Romans observed that when volcanic ash mixes with water, volcanic ash mixes with water. So here they say water and volcanic ash. Okay, let's go on. Question number 40. एक दौर में ऐश का मतलब होता था ऐश्वर्या राय. ये बेचारी बड़ी हो गई है. उसका था ना nickname ऐश. Yeah. So question number 40. The ability to build large dash. Large पे focus करना है. Size है. Ability to build large dash contributed to the success of Roman Empire. Roman Empire की success में जो role था, that was the ability to build, to construct, mega, big, huge, और कोई भी और word आ सकते हैं, right? So let's see. आखिरी question है, सही आंसर आना चाहिए सबका. ठीक है? Yeah. One of the most important facts about concrete for the Romans was that it can be created underwater. As the Roman Empire grew, the Romans needed to take control of the seas, and for this they needed to build harbours capable of holding a fleet of ships. Capable of holding a fleet of ships. पहले बोला harbors, उसके बाद बोला capable of holding the fleets of ship. अब जब fleet of ship आएगा तो इसका मतलब है large harbor. So answer क्या होगा? Harbor. अब harbor को लिख लें British HARBOUR या फिर लिख लें American HARBOR. दोनों तरह से ठीक है, अपने वाले हिसाब से नहीं. हार एस के साथ हार्बर सिंगुलर या प्लूरल, यू कैन राइट प्लूरल एज वेल. बिल्ड लार्ज हार्बर्स, लेकिन यहाँ पे अगर सिंगुलर भी लिखेंगे तो भी ठीक होगा. ठीक हो गया? चलें, दैट्स इट.